सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे पास है डोमिनार 400। तो इसका रेयर का फ्रंट का टायर दोनों घिस चुका है। तो इसमें एमआरएफ का टायर लगा हुआ था, तो देख सकते हैं काफ़ी घिस चुका है ये टायर। और टायर में कुछ गोटी वगैरह कुछ है नहीं। और फ्रंट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा फ्रंट का। तो ये भी घिस चुका है, तो इसको चेंज करेंगे। चेंज के हम लोग इसमें ZR6 का टायर डालेंगे। कौन सा टायर डालेंगे वो दिखाते हैं। तो ये रहा रईस का टायर है। और ये जो है आपका, मैं आपको साइज़ दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट का है। तो 110/70 ZR17 टायर है। और इसके एमआरपी देख सकते हैं ये फ्रंट का। और मैं इसका बैक का भी दिखा रहा हूँ आपको, ये रईस का ही है। और ये रहा इसका रेयर का, देख सकते हैं एमआरपी से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आपको टायर अब खोल के दिखाते हैं किस तरीके का पैटर्न है ये। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये टायर का पैटर्न, देख सकते हैं काफ़ी हेवी पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न है आपका थोड़ा लगभग पिरीली की तरह मैचिंग के आता है ये। और मैं फ्रंट का भी दिखा रहा हूँ आपको। तो देख सकते हैं साथ में दोनों को काफ़ी हेवी लगेगा फिटिंग होने के बाद। 0 डिग्री टायर है और काफ़ी तगड़ा टायर है ये। फिटिंग होने के बाद आप बहुत हेवी परफॉर्मेंस टायर है ये। तो चलिए फ्रेंड्स को फिटिंग करते हैं, इसको दिखाते हैं आपको किस तरीके से लुक आता है फिटिंग होने के बाद। तो वीडियो पे बने रहे।
फ्रेंड्स देख सकते हैं फिटिंग करने के बाद काफ़ी राउंड शेप में आया है। तो थोड़ा आपको पतला लगता होगा, काफ़ी राउंड साइड में है, देख सकते हैं। तो काफ़ी राउंड शेप में आया है। तो आप इसको लेके काफ़ी ज़्यादा लीन कर सकते हैं। तो चलिए इसको वापस से फिटिंग कर लेते हैं, उसको दिखा। देख सकते हैं फ्रंट का कंप्लीट हो चुका है। तो फिटिंग करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब रेयर का काम कर लेते हैं, रेयर का खोल लेते हैं। रेयर का खोल देते हैं, चलिए। फ्रेंड्स दोनों का कंपेयर करके दिखाते हैं। ये रहा पहले का टायर और ये रहा अभी का। तो देख सकते हैं ये थोड़ा फ्लैट शेप में, ये राउंड शेप में है। तो चलिए इसको भी फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को लुक्स।
फ्रेंड्स फिटिंग करने के बाद देख सकते हैं राउंड शेप में आया है टायर, इसको लेके आप बहुत ही तगड़ा तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये रहा इसका मॉडल नेम है, ये रही इसका, मैं आपको इस जगह से दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका मॉडल नेम है। चलिए इसको वापस से फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फिटिंग हो चुका है फाइनली, तो काफ़ी राउंड शेप में आया। तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं कंप्लीट दोनों सामने पीछे का। तो ये रहा रियर का और ये जो है ये आपका फ्रंट का। तो फ्रेंड्स ये आपको टायर परचेस करना है तो हम मेरे को डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे, वहाँ पे आके ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखने की, ऐसे इन्फॉर्मेशन टायर रिलेटेड वीडियो चैनल पर लोग लाते रहते हैं।